Hello everyone, so today we are going to study a new topic and very important topic, that is pollination, right? Pollination, you all know right from the very smaller classes you have been studying this topic, that is called pollination, right? So what is pollination? This is a pre-fertilization event in the angiospermic plants, right? The angiosperms have flowers and flowers are made for the purpose of sexual reproduction. इस sexual reproduction को perform करने के लिए fertilization से पहले दो event हो चुके होंगे. एक तो gametogenesis that has already done. We have studied that microsporogenesis and megasporogenesis. Right now we are going to study another event, that is the gamete transfer. Gamete transfer that comes under pollination in angiosperm. So what is the pollination in fact? Pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. Correct. So what is the meaning of this one? Suppose we take an example. This is a female reproductive part and this is the male reproductive part of this flower, right? So you all know that here will be formation of the pollen grains, okay? Transfer of these pollen grains from anther to the stigma is called as pollination. Not always within the flower, there can be different situations, right? So pollination का मतलब होता है transfer of pollen grains from anther to stigma. अब ये different types के हो सकते हैं on the basis of different aspects, okay? Right, the number of plants or the type of pollinating agent, okay? देखिए किसी भी टॉपिक को समझने का एक तरीका होता है, ठीक है? सिर्फ pollination में आपको transfer of pollen grains from anther to stigma नहीं पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है? सपोज द वन फ्लावर इज insect pollinated, one is bird pollinated, air pollinated, water pollinated. Now this becomes a responsibility as a student कि हमें ये भी देखना होगा उस पर्टिकुलर प्लांट में, उस पर्टिकुलर फ्लावर में, उस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन में वो कौन-कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो उस फ्लावर को या प्लांट को कैपेबल बनाते हैं, अडेप्टिव बनाते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनेशन के लिए, करेक्ट? सो हमको इन सब चीजों को देखना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट? और ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ओनली. ट्रांसफर के बेस पर हम ये काम करते हैं कि कितने तरीके के पॉलिनेशन टाइप्स हो सकते हैं. तो नाउ लुक द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की मैं बात करता हूं आपसे, तो दो तरीके के पॉलिनेशन हो सकते हैं, राइट? वन इज द सेल्फ pollination and another one is the cross pollination, right? Cross pollination, self pollination and cross pollination. Self pollination दो तरीके का हो सकता है. One is autogamy, another one is geitonogamy. What is that? Geitonogamy, okay? Cross pollination is named by other names like xenogamy. You can call it xenogamy or you may call it allogamy. देखिए हर तरीके के नाम का आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन सब का एक पर्टिकुलर मीनिंग है और ये किसी भी नाम से आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आप ये गलती नहीं करें कि आपको पर्टिकुलर नाम ही पता नहीं हो. अब हम मूव करते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करते हैं, राइट? तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सेल्फ का मीनिंग होता है ऑटो, राइट? So here we are talking about pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma. अभी self का मतलब है, auto का मतलब है same plant. Just remember this thing, okay? Same plant. Now same plant can have two situations. Suppose I draw a plant here. This is a plant. If I try to draw here, and this plant is having two flowers. Obviously there can be number of flowers. But suppose I am drawing these. One plant with two flowers. Now look, there can be two situations, okay? Within one plant, there can be two situations. One situation, if the pollen grain is being transferred from one flower to the same flower of the same plant, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन चला जाए तो हुआ ऑटोगेमी.
क्या हुआ? ऑटोगेमी। और अगर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो हुआ जिटोनोगेमी। क्या हुआ बेटा? जिटोनोगेमी। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में दो तरीके से हो सकता है, ऑटोगेमी विद इन वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट, जिटोनोगेमी इन टू फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट. Correct? Now we come to the cross pollination that you may call xenogamy or allogamy. Now what is the situation? One thing is very clear that in xenogamy or allogamy or cross pollination there are two plants involved. Okay, so what will happen? Suppose I draw another plant, but this is the condition that the species will remain same. Species will remain same for the particular type of pollination that we are calling cross pollination. That means if the pollen grain of one flower transferred to another flower of another plant. Okay, so what is cross pollination? Transfer of pollen grain from anther of one flower of one plant to the stigma of another flower of another plant but of same species is called as cross pollination. Okay, so here we make clear that pollination is of two types, self pollination and cross pollination. In self pollination one plant is involved, flowers can be different, and in cross pollination two plants are involved but of the same species. Okay, so this is the major category of the classification of the pollination, right? Now we talk about another issues of the self pollination and cross pollination, right? Now in pollination first we take about the autogamy. What? Autogamy. This is a type of self pollination. What kind of self pollination? अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात का जिक्र किया था कि self pollination में autogamy is a type where the pollen grains of one flower reaches to the same flower, or the pollen grains of the anther of one flower reaches to the stigma of the same flower. इस ऑटोगेमी को सक्सेसफुल बनाने के लिए या इस टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज प्लांट ऑप्ट करता है, और वी कैन से दैट व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस प्लांट हैव टू फॉलो दिस system. So now you see that autogamy occurs when we find some particular situations like number one I talk about, that is cleistogamy. What I am calling cleistogamy. क्लिस्ट, देखिए क्लीन, क्लीन, क्लिस्ट या क्लीन का मतलब होता है क्लोज्ड. What kind of closed? This is a phenomena where the flowers always remain closed. They never open. Flower कभी open ही नहीं होता है. इसका मतलब क्या बन जाता है? जब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा तो उसमें पॉलिनेशन क्रॉस होने की संभावना ही खत्म हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन ही इसके अंदर बचेगा. लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात है. आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर फ्लावर क्लिस्टोगेमस है, ओपन नहीं हो रहा है, तो वो फ्लावर 100% बाइसेक्सुअल ही होगा, वो यूनिसेक्सुअल नहीं हो सकता है. ठीक है, कोमेलाइना इज द एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगेमी. सेकंड थिंग कैन बी होमोगेमी. होमोगेमी, देखिए होमो का मतलब सेम और गेमोस का मतलब मैरिज है ना. होमोगेमी, in these kind of flowers both male and female flowers mature at the same time, or male part or female part matures at the same time, hence it support the autogamy or the self pollination. Third thing may occur, that is called bud pollination. Interesting phenomena, bud pollination. What happens in this situation? Flower get open, flower खुलता है, लेकिन पॉलिनेशन इस फ्लावर में बड कंडीशन में ही हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर ओपन हुआ, उससे पहले ही क्या प्रोसीड हो गया, उसके अंदर पॉलिनेशन प्रोसीड हो गया. इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन बड पॉलिनेशन कंडीशन में भी हो सकता है या बड कंडीशन के अंदर भी पॉसिबल हो जाता है. तो ऑटोगेमी अंडर सेल्फ पॉलिनेशन may occur due to the cleistogamy, flower never open. Homogamy, mature at the same time. Bud pollination occurs within the बड कंडीशन. देखिए यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं. क्लिस्टोगेमी, फ्लावर्स नेवर ओपन. चेस्मोगेमी, राइट, चेस्मोगेमी का मतलब फ्लावर ओपन हो जाता है. अब यहां दो कंडीशंस हैं.
क्लिस्टोगेमी में तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता है। लेकिन chasmogamous flowers can show both kind of situations. They may show self or may show cross. Okay, so you must be clear about this point. आपको एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावर के बारे में बात कर रहा हूं, प्लांट के बारे में, that is Commelina. I am talking about Commelina. Right? This is a plant which show very unique phenomena. देखिए इस Commelina में क्या होता है, इस प्लांट के अंदर क्लिस्टोगेमी तो है ही है, इसमें चैस्मोगेमी भी होती है। इसके अपर फ्लावर्स जो होते हैं दे शो चैस्मोगेमी। व्हाट काइंड ऑफ चैस्मोगेमी, मतलब इनका फ्लावर ओपन हो जाता है, जो जमीन के ऊपर होते हैं, और जो जमीन के नीचे होते हैं दे शो क्लिस्टोगेमी। तो कितनी शानदार फिनोमेना है कि जमीन के ऊपर वाला फ्लावर तो क्या शो कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, और नीचे वाला शो क्या कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब another type of self pollination is जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी, neighbor, jiton means neighbor, पड़ोसी, ठीक है। This kind of self pollination occurs generally in those plants which are monoecious. Okay, in monoecious plants, monoecious plants, look, इस बात का मतलब क्या है, monoecious plant का मतलब क्या है? It means that a plant which have two types of flowers, two types of unisexual flowers. Suppose this is a flower which is having only the female part, and this is the flower which is having only the male part. Okay, male part, right? Here I have drawn it lower down. मैं इसको यहां बना देता हूं। तो देखिए अब इसके पास इस तरह के फ्लावर्स हैं जिसमें फ्लावर इधर यूनिसेक्सुअल मेल है या यूनिसेक्सुअल फीमेल है। नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन, नाउ यू जस्ट इमेजिन, अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन कैसे, इस एंथर से निकलने वाला पोलन ग्रेन यहां से चल के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएगा। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन दैट वी कॉल जिटोनोगेमी। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमने पढ़ा क्या, ऑटोगेमी, देन आफ्टर जिटोनोगेमी। Now we move on to the cross-pollination, right? Very, very important, cross-pollination. Now we talk about the cross-pollination, okay? Very, very important from the purpose of sexual reproduction. In fact, अगर मैं ये कहूँ कि sexual reproduction में variations आते हैं and it is a better mode over asexual, तो self और cross में से I would prefer cross, okay? वो अलग बात है, nature में किस तरीके का pollination इनके अंदर होता है, लेकिन cross-pollination provides more variations rather self। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को आप एक और नाम से भी जान सकते हैं, that is xenogamy, और you may call it एलोगेमी। एलोगेमी, इस xenogamy को और एलोगेमी को पॉसिबल कराने के लिए जो हमारे पास या फ्लावर के पास जो अडेप्टेशंस होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, जो फैसिलिटेशंस होते हैं, वो ये सारे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस टॉपिक को आपकी किताब में पढ़ाया गया है अंडर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। व्हाट डू दे कॉल दैट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कुल मिलाकर बात यह है कि वो स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो इस xenogamy को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट ईच वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हार्कोगेमी। हार्कोगेमी का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल बैरियर। व्हाट काइंड ऑफ, मैकेनिकल बैरियर, राइट। सो मैकेनिकल बैरियर की बात अगर मैं करता हूं तो ऐसा पॉसिबल है कि स्टिग्मा पर या कार्पल पर कोई इस तरह का स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हो जो अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को रिसीव होने ही नहीं दे। डेफिनेटली वो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को ही अपने पास आने देगा। सो हार्कोगेमी इज द वन रीजन, राइट। दिस इज मैकेनिकल बैरियर। नाउ वी टॉक अबाउट द डाइकोगेमी, ओके। देखिए नाम से ही पता चल रहा है डाई का मतलब टू है। दिस इज अ फिनोमेना वेयर मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स, राइट। अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया है तो फीमेल नहीं होगा, और फीमेल हो गया है तो मेल नहीं होगा। इसका मतलब ये बात श्योर बन जाती है कि अब सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही उसके अंदर होगा, करेक्ट। Then after we talk about the self incompatibility, incompatibility अयोग्यता, मतलब एक फ्लावर अपने पोलन ग्रेन को ही रिसीव नहीं करता है। In fact, this is a very unique phenomena. This is genetically controlled phenomena. What kind of
genetically controlled phenomena. Correct? So very important from the neat point of view. Okay, examples भी आपको पढ़ने होंगे इनके, आप रेफरेंस मटेरियल में जाकर देखें, क्योंकि सब कुछ इतना एक छोटे वीडियो में आना पॉसिबल नहीं होता है. So you can read this reference material there. Then we talk about the male sterility. Male sterility का मतलब यह है कि अगर किसी फ्लावर का मेल पार्ट स्टेराइल हो, फर्टाइल न हो, वो पोलन ग्रेन बनाने में केपेबल ही न हो, तो क्या कोई चांस बनता है सेल्फ पॉलिनेशन का? एब्सोल्युटली नो, ये पॉसिबल ही नहीं है. देन वी टॉक अबाउट डायोसिज्म. राइट? डायोसिज्म क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी. दैट मींस द प्लांट बेयर्स ओनली either male flowers or it bears female flowers. एक प्लांट के पास या तो मेल फ्लावर्स हो, दैट कंडीशन यू कॉल स्टेमिनेट. व्हाट यू कॉल? स्टेमिनेट. और यू कॉल द फीमेल्स पिस्टिलेट. यू कॉल इट पिस्टिलेट. राइट? अब आप बताइए, एक प्लांट के पास अगर मेल ही मेल फ्लावर्स है तो वो कहां से सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा? डेफिनेटली उसे दूसरे प्लांट के पास जाना पड़ेगा. तो देयर विल बी वन कंडीशन ओनली, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, देन इज हेटेरोस्टाइली. वेरी यूनिक फिनोमेना हेटेरोस्टाइली. अब मान के चलिए कि मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूं हेटेरोस्टाइली को. मान के चलिए ये एक प्लांट है. दिस इज वन प्लांट एंड दिस इज द फ्लावर. Look, this is the flower where this is the stigma, and you look very unique situation. Suppose the anthers are located at the base position, at lower position. Now you can understand that it is very difficult for this pollen grain to reach on this stigma. Hence, this flower will support cross pollination. Okay, so these are the devices which support cross pollination. यहां मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं. डाइकोगेमी जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी, और दूसरी क्या हो सकती है? प्रोटोगाइनी. आप नाम से समझ सकते हैं. एंड्रो वर्ड आता है मेल्स के लिए. किसके? मेल्स के लिए. और गाइनी वर्ड आता है किसके लिए? फीमेल्स के लिए. ओके, मैंने आपको इनिशियल स्टेज पर ही बताया था. डाइकोगेमी, maturing of the male part और female part at different times. अगर वो दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं, इसका मतलब वो सेल्फ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो क्रॉस ही परफॉर्म करेंगे. सो दीज आर द सपोर्टिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट सपोर्ट द क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी और एलोगेमी. अगर मैं आपसे जेनेटिकल कंसर्न में बात करूं कि which would be the better one out of self or cross, I would go for cross pollination. Right? Now we move on to the types of pollination on the basis of pollinating agent. Okay, now we talk about the different types of pollinating agents which help in the process of pollination. That means we have studied what is pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma, right? So transfer of pollen grains from anther to stigma is done by the different pollinating agents. Okay, they can be of two types. They can be abiotic agents and they can be biotic agents. What? Biotic agents. Now you can understand, बहुत पढ़ा है आपने 11th क्लास के अंदर. Abiotic, bio, life, A means absent. जहां पर लाइफ एब्सेंट हो, इस तरह के एजेंट्स जिनमें लाइफ नहीं हो और वो पॉलिनेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, they are called as abiotic agents. Like you all know about the air, right? You all know about the water. These are abiotic pollinating agents. Now we talk about the biotic agents, those who are having life, right? Like insects, like birds, got it? Like other animals, like snail, elephant. Okay, so these are living. elephant का नाम देखते ही आपको लगा होगा, हैं ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है. So we will discuss about all these kind of different types of agents under coming the abiotic or biotic category. So यहाँ पर मैंने आपको बताया कि pollinating agents on the basis of the presence of life, they can be of two types, abiotic and biotic. Now we move on to the different terms given to the different types of pollination on the basis of the pollinating agent. तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं,
ये हम लिखेंगे टर्म, यहां पर हम लिखेंगे टर्म, और यहां होगा एजेंट. ओके, यहां पर कौन होगा? एजेंट, राइट? सो आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमोफिली. व्हाट? एनिमोफिली. देखिए ये एनिमोफिलिंग, ये वर्ड एक बार मैं आपको बता देता हूं, बार बार हम नहीं लिखेंगे. फिलिंग का मतलब होता है टू लव, टू अट्रैक्ट. ओके, और एनिमो वर्ड का मतलब होता है एयर. क्या होता है? एयर. तो एनिमोफिली इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर द पॉलिनेटिंग एजेंट इज व्हाट? एयर. करेक्ट. Then we talk about the second type of pollination, or that is hydrophily. Hydrophily. Okay. Hydrophily is a type of pollination where the pollinating agent is water. You can see the hydro. Okay. Hydro word is telling you what is the meaning of hydrophily. Next we talk about third one is the entomophily. Third one is what? Entomophily. Entomophily. बताइए मुझे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं. एंटोमोलॉजी. क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी. सो एंटोमो मींस इंसेक्ट, राइट? इंसेक्ट. द टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर व्हाट इज द पॉलिनेटिंग एजेंट. यहां पर वाटर था, इसको यहां लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना होंगे. Entomophily, it involves insects as pollinating agent. Correct. Now we talk about another, chiropterophily. Chiropterophily. In this the pollinating agent is bat. चमगादड़ से pollination होता है इसके अंदर. Okay, very very interesting. Next I write malacophily. What I'm writing? Malacophily. मेलेकोफिली के अंदर मोलस्क्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन इन्वॉल्व होते हैं? मोलस्क्स इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली स्नेल इन्वॉल्व होता है. स्नेल, घोंगा जिसको हम कहते हैं. ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली. दीज आर थ्री बेसिक दैट वी स्टडी इन आवर सिलेबस. अदर देन दीज, chiropterophily from the bat, malacophily from the mollusks. Okay, I write more. So I erase these three. Myrmecophily. Here the pollinating agent are ants. चींटियों से pollination होता है इसके अंदर. One more very interesting I am telling you, elephophily. Okay, very rare people tell about this thing. I am telling you elephophily. नाम से तो पकड़ में आ ही रहा होगा. Elepho means elephant. Okay. In this the pollinating agent is elephant. Okay. And now it becomes a question again कि elephant किसमें करता होगा. देखिए ये दुनिया के बहुत बड़े flower that is called as Rafflesia. What is the name of that? Rafflesia. बहुत बड़ा flower होता है, कई सालों में एक बार खिलता है, और इसके अंदर pollination elephant से होता है. ठीक है. So in this video we talked about the different types of pollination on the basis of the transference, number of plants, where we talked about the self-pollination, cross-pollination, their different types. Then after we talked about the different pollinating agents, abiotic and biotic. Then after we talk about the different types of pollination on the basis of the pollinating agent, like anemophily, hydrophily, entomophily, chiropterophily, myrmecophily, elephophily, number of. Okay. सो ये जो मैंने बनाया है ये है पार्ट 1 पॉलिनेशन के लिए. इसके लिए मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, दैट इज पार्ट 2 फॉर द पॉलिनेशन. उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अडेप्टेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. क्या उन फ्लावर्स के अंदर खास बात होती है, उन प्लांट्स में क्या खास बात होती है, उन पोलन ग्रेन्स में क्या खास बात होती है, जिससे वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनेशन को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. सो दिस वाज पार्ट 1 एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पार्ट 2.